Good morning, traders. This is Tejas Shekhar from Spider Software, and आज के webinar session we'll be learning about the PSAR indicator and how we can best use the PSAR indicator for developing intraday strategies. तो हमने introduction एक ले लिया है, so we'll be continuing with the webinar now. So I'll just turn off my webcam and we'll proceed. Yes, तो जैसे हमने discuss किया है, we'll be talking about the PSAR indicator today, which is the parabolic stop and reverse indicator, technical indicator है. So before we proceed with understanding what exactly this indicator is, मैं पहले जानना चाहता हूं कि आप में से कितने attendees को इस indicator के बारे में already कुछ information है, if you have already used it before. तो हम बस एक short poll launch करेंगे कुछ देर के लिए, so that I can get an understanding of if you are already familiar with this indicator or not. तो please आप vote कीजिए इस poll में ताकि मुझे understanding मिल जाए कि आप कितने familiar हो इस indicator के साथ. So I can see that almost the majority of the people who have joined this webinar session have voted, and majority के votes जो हैं, I am seeing that it is a no. Almost 60 to 70% of the attendees today are not familiar with this indicator, जिसे हम आज discuss करने वाले. So I hope this will be a very exciting session for all of you. And इसी के साथ हम इस poll को close कर लेंगे and we'll move on to understanding what exactly this indicator is. तो यहाँ पर we'll just move our slide show. तो आज के वेबिनार में पहले तो हम समझेंगे इस इंडिकेटर में क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. We'll understand what is the parabolic SAR. अब इंडिकेटर के भी वेरियस पैरामीटर्स होते हैं. जैसे हम मूविंग एवरेजेस की बात करें, there are different periods that we can use for different purposes. तो पीसार में भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए हम क्या एडजस्ट करके बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, उसके लिए हम समझेंगे पैरामीटर्स को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं. और फिर पीसार को ऑब्वियसली एज यू आर ऑल टेक्निकल, यू आर ऑल ट्रेडर्स हु आर फेमिलियर विद टेक्निकल एनालिसिस, आप जानते होंगे कि एक इंडिकेटर को हम इंडिविजुअली यूज नहीं करेंगे. वी विल आल्सो यूज अदर इंडिकेटर्स अलोंग विद इट टू गेट अ कंफर्मेशन, अ बेटर कंफर्मेशन, अ मोर इन्फॉर्म्ड एंट्री हमारे ट्रेड्स के लिए, ताकि हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिले ऑफ सक्सेस. तो हम वो भी देखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स को हम पेयर कर सकते हैं. और फिर फाइनली आज का जो मेन टॉपिक है, we'll be discussing an intraday strategy which is developed using this PSAR indicator. और इस PSAR indicator को किस तरह से किस टाइम फ्रेम पर हम इस्तेमाल करेंगे, उसे हम पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे with a few examples of both bullish as well as bearish setups. तो हम move on करते हैं. We'll understand the first topic over here, which is what exactly is the parabolic SAR indicator. तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक चार्ट मैंने प्रेजेंट किया. There is an image of a chart. यहाँ पर BSC स्क्रिप्ट जो है उसका चार्ट ओपन है, एंड आप देख सकते हो जो प्राइस की मूवमेंट है उसके ऊपर और नीचे की तरफ देयर आर अ फ्यू डॉट्स व्हिच आर प्रेजेंट. देयर आर रेड डॉट्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव द प्राइस एंड देयर आर ग्रीन डॉट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द प्राइस. तो ये जो डॉट्स हैं, दीज आर व्हाट इज कॉल्ड आवर पीसार इंडिकेटर. इट्स कॉल्ड अ पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर. बेसिकली क्या हमें दिखाता है, दिस इज शोइंग अस ट्रेंड रिवर्सल्स. हम कहां पर ट्रेंड का कंफर्मेशन ले सकते हैं वो ये इंडिकेटर हमें दिखाता है. एज यू कैन सी व्हेन द प्राइस इज बिलो द डॉट्स ओवर हियर, रेड कलर के डॉट्स है, इट इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है. और जब प्राइस इन डॉट्स के नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो शिफ्टिंग होती है डॉट्स फ्रॉम अबव टू बिलो और बिलो टू अबव, जो भी केस होता है, वी आर गेटिंग अ शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड इन दिस केस. जैसे यहाँ पर पीएफसी में आप देख सकते हो, प्राइस जब बॉटम पर ऑलमोस्ट 2050 लेवल के करीब जब गया था, from there we have seen a reversal and immediately over there we have seen a trend shift. रेड डॉट से ग्रीन डॉट्स में शिफ्ट हो चुका है, just signifying a trend reversal. तो ये जो parabolic stop and reverse indicator, this was developed by Mr. Wells Wilder Jr., who is also very famous for creating other important technical indicators. I'm sure आप में से सभी ने इन indicators को previously use किया होगा, जो है RSI, DMI, ADX, ATR. ये चार की इंडिकेटर्स हैं जो मिस्टर वेल्स वाइल्डर ने ऑलमोस्ट 1989, 1990 के समय पर इसे डेवलप किया था. एंड ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स हैव बीन सो प्रोफिशिएंट कि वो आज के दिन में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं. तो पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स वाज आल्सो डेवलप्ड बाय द सेम पर्सन हु हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ दीज अमेजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स. तो यहाँ पर भी वही मेंशन किया गया कि दैट इट अपीयर्स एज अ सीरीज ऑफ डॉट्स ऑन अ प्राइस चार्ट, एंड जब वो प्राइस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डॉट्स, इट इज सिग्निफाइंग कि वहां पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है. एंड जब वो प्राइस के नीचे चल रहे होते हैं वो डॉट्स, इट इज सिग्निफाइंग कि वहां पर एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है. एंड व्हेन दीज डॉट्स आर स्विचिंग देयर पोजीशन फ्रॉम अबव टू बिलो और फ्रॉम बिलो टू अबव, एक ट्रेंड रिवर्सल वहां पर हमें इंडिकेशन मिलता है.
तो ये बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल से हमें क्या आइडिया मिलता है, वी आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम, किस तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। और ये जो डॉट्स है, आई विल जस्ट गो बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड ओवर हियर। तो ये जो डॉट्स है, एज यू कैन सी, इट रन्स बिलो द प्राइस ओवर हियर एंड रन्स अबव द प्राइस। तो जब हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, दीज डॉट्स आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई हम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इफ फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, यू हैव मेड अ लॉन्ग एंट्री ओवर हियर एट द बॉटम नियर द लेवल ऑफ 2050, फिर उसके बाद आप पोजीशन को कब स्क्वायर ऑफ करोगे, व्हेन विल यू क्लोज आउट दिस पोजीशन। तो जब यहाँ पर प्राइस नियरली 2450 के लेवल के करीब गया एंड वहां से जब ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, when the price has crossed below these averages, तब जाकर ये ट्रेंड शिफ्ट होता है। तो उस समय पर जाकर हम हमारी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ रखनी चाहिए। दिस इंडिकेटर इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग शॉर्ट टर्म में मोमेंटम किस साइड पर है एंड हमारे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट्स कहाँ पर होने चाहिए। And once again, as with all momentum indicators, it is best used in a trending market. जब हम sideways market में से observe करेंगे तो there are definitely a lot of false reversals which can happen. But ये false reversals जो है इसे filter out करने के लिए किन इस indicators को इसके साथ pair करना चाहिए, we'll also be taking a look at that, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब ये पीसार के जो पैरामीटर्स हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, जब हम स्टडी सिलेक्शन करते हैं, तो आई होप यू आर एबल टू सी द कर्सर नाउ, व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट अ बिट बेटर। तो यहाँ पर हम जस्ट सॉफ्टवेयर में वापस चले जाते हैं, विल टेक अ लुक एट हाउ एग्जैक्टली वी कैन ऐड दीज इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक फ्रेश चार्ट ले लिया एंड मैंने एक्स प्रेस कर लिया, विच इज द शॉर्टकट की फॉर द स्टडी सिलेक्शन। एंड यहाँ पर जब हम P वाले सेक्शन में जाएंगे, वी हैव टू इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द पैराबोलिक सार। तो एक है पैराबोलिक सार, दूसरा है पैराबोलिक सार विद एनवेलप। तो इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द एनवेलप इंडिकेटर, इट इज बेसिकली एक जस्ट बैंड आइडेंटिफाई कर लेता है विद इन विच द प्राइस मूव्स। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जो हम आज देखेंगे, तो हम उसमें डिफॉल्ट जो पैराबोलिक सार है उसी का इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हेन वी गो टू पैरामीटर ओवर हियर, हमारे पास 3 पैरामीटर्स है, जो है मिनिमम, स्टेप वैल्यू और मैक्सिमम। ये 3 पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, हाउ दिस अफेक्ट्स द प्लेसमेंट ऑफ द इंडिकेटर, इंडिकेटर का जो बिहेवियर है वो कैसे अफेक्ट होता है यूजिंग दिस, वी विल टेक अ लुक एट दैट विद एन एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पर जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले वील जस्ट ऐड अ स्टडी ओवर हियर, वील ऐड दिस इन ऑल टाइम फ्रेम्स। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ऐड कर दिया यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे। सो दिस इज गिविंग अ ब्रीफ आइडिया ऑफ ट्रेंड कौन से साइड पर शिफ्ट हो रहा है एंड मेरा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट्स, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल इन एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, तो मेरा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए। अब ये जो पैरामीटर्स हैं इसका मतलब क्या होता है, तो व्हाट दीज पैरामीटर्स डू इज, यहाँ पर जब हम इसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो स्टॉप लॉस है, मुझे लग रहा है कि द स्टॉप लॉस इज ट्रेलिंग अ बिट फर्दर अवे देन आई प्रेफर इट टू, मुझे क्लोजर स्टॉप लॉस चाहिए, मुझे फास्टर इंडिकेशन चाहिए कि मेरा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मॉडिफाई दिस स्टेप वैल्यू पैरामीटर। जैसे यहाँ पर 0.02 है, सो इफ आई वांट द इंडिकेटर टू बी मोर सेंसिटिव, मैं वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज कर लूंगा। So I will take for example the indicator value of 0.03. So you can see immediately over here, जो PSAR है, it has moved a bit closer to the price over here and slightly earlier मुझे यहाँ पे indication मिल रहा है कि ये trend reverse हो चुका है। So what this PSAR does is, तो यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं, we will leave the minimum parameter as it is and जो दो चीजों को हम adjust करेंगे, that is the step value factor over here and it is the maximum step। तो मैक्सिमम स्टेप क्या करता है, बेसिकली डिटरमाइंस ये किस तेजी से आपकी प्राइस के तरफ मूव करता है, जो पीसार के डॉट्स हैं, एट व्हाट स्पीड इट इज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पर इसे भी अगर मैं 0.3 कर दूं इंस्टेड ऑफ 0.2, यू कैन सी दी डॉट्स जिस तेजी से प्राइस की तरफ मूव करते हैं, दैट इज व्हाट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो यहाँ पे विल गो बैक टू आवर वेबिनार ओवर हियर, विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ भी मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है। तो ये जो स्टेप वैल्यू वाली पैरामीटर है, इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सेलरेशन फैक्टर, जो हमारे पीसार में कितनी तेजी से चेंज होता है, हाउ क्विकली इट एडजस्ट टू द प्राइस, उसे अफेक्ट करता है। तो जितना हायर आपका स्टेप वैल्यू रहेगा, उतनी तेजी से आपका पीसार अडेप्ट करेगा टू एनी चेंजेस इन द प्राइस। एंड ये जो
हमारी पैराबोलिक सार की सेंसिटिविटी है, हाउ फास्ट इट एडजस्ट, उसके लिए हम दो चीजों को मॉडिफाई करेंगे, विच इज द स्टेप वैल्यू एंड ऑल्सो द मैक्सिमम स्टेप। अब सपोज हम ट्रेड कर रहे हैं ऐसे मार्केट में जो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बहुत स्टेबल एंड स्मूथ मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट है, जहां पर हमें पोजीशन को मेंटेन करना है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विदाउट गेटिंग स्टॉप्ड आउट। तो उस पर्पस के लिए हम जो है मिनिमम वैल्यू, जो हमारी स्टेप वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू है, उसे वी कैन फर्दर डिक्रीज इट। जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो हैं, it is 0.02 for the minimum step value is 0.02 as well, and the maximum is 0.2। तो इसे अगर हमें सेंसिटिविटी को रिड्यूस करना है, वी कैन फर्दर रिड्यूस इट टू 0.01 फॉर द स्टेप वैल्यू, एंड मैक्सिमम जो है वैल्यू उसे भी हम 0.1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वील बी एबल टू, हमारे इंडिकेटर में हमें कम रिवर्सल्स के इंडिकेशन मिलेंगे, विच इज बेटर फॉर द स्मूदर ट्रेंडिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मार्केट। वेरएज अगर हम एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे रिवर्सल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट रिवर्सल्स एवरी फ्यू डेज और एवरी फ्यू कैंडल्स, तो उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ हायर सेट ऑफ पैरामीटर्स विच इज अ स्टेप वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार्ट पर अगर हम वापस जाएं, तो यू कैन सी दैट आई हैव एडजस्टेड माय स्टेप वैल्यू and maximum to 0.03 and 0.3। So depending on आप किस टाइप के एसेट में ट्रेड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी कैन बी क्वाइट वॉलेटाइल, बहुत रेंजिंग मूवमेंट्स विजिबल हो सकते हैं निफ्टी में। सो टू कैच दीज फास्टर ट्रेंड रिवर्सल्स, आई वुड सजेस्ट यूजिंग अ हायर पैरामीटर ओवर हियर। जो डिफॉल्ट है उसे हम हर जगह पर सेम पैरामीटर को नहीं इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द एसेट्स मूवमेंट एंड ऑल्सो the time frame that we are trading on। तो इसी से हम हमारे सेकंड पोल को लॉन्च कर लेंगे टू सी इफ वी शुड बी यूजिंग। तो अब जो है एक सेकंड पोल आपके स्क्रीन पर आएगा। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस नाउ, should we use different PSAR parameters for intraday and swing trading? अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए क्या हमें अलग PSAR के पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? So if you have understood what we have discussed now, I hope you will be able to give the correct answer to this poll। तो प्लीज आप वोट कीजिए इस पोल में, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी डिस्कशन के थ्रू। I can see so far around 60% of people have voted। बाकी जो 40% है, प्लीज आप भी वोट कीजिए। आपके भी जो इनपुट्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कितनी क्लैरिटी मिली है इस कॉन्सेप्ट पे। सो आई कैन सी दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव अंडरस्टूड हमने क्या डिस्कस किया। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग, या वो लॉन्गर होल्डिंग पीरियड, ज्यादा हमें स्टेबल ट्रेड्स चाहिए, उस पर्पस के लिए हम जो है हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स का भी अगर इस्तेमाल करें, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, वहां पर देयर इज अ लॉट मोर नॉइज विच इज प्रेजेंट, पर्टिकुलरली डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो। तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेटली अलग अलग सेट ऑफ पैरामीटर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिड गेट द आंसर करेक्ट, बट around 20% of people were a bit confused। Some have answered maybe, some have answered no। So I hope this has become clear कि depending on आप किस time frame पर trade कर रहे हो, definitely उसका impact पड़ेगा on a longer time frame, जैसे daily या weekly time frame पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका, तो I would suggest using a जो default parameters हैं और slightly lower than default as well, आप उसको try out कर सकते हो, figure out which set of parameters you feel most comfortable with। बट ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम हम हायर पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वापस यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। तो ये जो फाइनल पॉइंट यहाँ पर मेंशन्ड है, a lower step value results in the SAR being less sensitive and indicating fewer reversals, and जो higher step value है, it is more useful in volatile markets। तो इंट्राडे में जितनी हम volatility experience करते हैं current days में, for the past few months, few years, markets have been so volatile कि ये जो volatile sentiment है, to adjust to that we will also be using a higher step value, higher maximum step value। but इसका एक और फर्दर ड्रॉबैक आ सकता है, जब हम हायर वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं, इट कैन रिजल्ट इन अ लॉट मोर whipsaws। तो जो है फेक रिवर्सल्स बिकॉज ऑफ सम स्लाइट नॉइज इन द मार्केट, डेफिनेटली अ लॉट मोर whipsaws भी आप एक्सपीरियंस करोगे इफ वी यूज अ हायर सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो इसको फिल्टर करने के लिए
हम पीसार के साथ किन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, विल बी डिस्कसिंग दैट नाउ। तो पीसार के साथ हम इस्तेमाल करेंगे द फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज बेस्ट पेयर्ड विद द पीसार, इट इज कॉल्ड द एडीएक्स। तो एडीएक्स जैसे हमने वेबिनार की शुरुआत में ही डिस्कस किया था, जो मिस्टर जे वेल्स वाइल्डर जूनियर है जिन्होंने इस इंडिकेटर पीसार को डेवलप किया है, इज ऑल्सो द सेम पर्सन हु हैज डेवलप्ड दिस एडीएक्स इंडिकेटर व्हिच इज वंडरफुल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल विल जस्ट गो बैक टू द सॉफ्टवेयर, विल ऐड द एडीएक्स एज वेल। यहाँ पर जब हम EDX को ऐड करने जाएंगे, इन स्पाइडर द इंडिकेटर इज नॉट कॉल्ड एज द EDX, इट हैज अ स्लाइटली डिफरेंट नेम जिसका नाम है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पर आप डी सेक्शन में आ जाओगे, यू विल बी एबल टू फाइंड इट ओवर हियर। विल यूज द डिफॉल्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स जो 14 पीरियड्स है, वी विल लीव दैट एज इट इज। तो यहाँ पर इफ वी ऐड द एडीएक्स वी कैन सी देयर आर थ्री सेट ऑफ पैरामीटर्स जो इसमें इन्वॉल्व है। एक यहाँ पर है प्लस डी, एक है माइनस डी, एंड दी थर्ड लाइन which is the white line over here, वो है हमारी ADX. So the thing that helps us to identify the strength of a trend is the ADX. तो जैसे यहाँ पर निफ्टी में जब ये upward एक smooth move आया था, we have seen that the ADX is rising in this case, जो हमें एक indication देता है कि market strength जो है वो maintain हो रहा है, it is rising. So this ADX rises in both an uptrend as well as downtrend. यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड आई है, वी कैन सी दैट द EDX इज आल्सो राइजिंग इन दिस केस ओवर हियर। डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड के समय, दोनों समय EDX राइज होता है। एंड इसी के साथ ये जो प्लस DI और माइनस DI है, दिस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड है, यहाँ पर EDX इज राइजिंग, सो ट्रेंडिंग मार्केट है। उसी के साथ द प्लस DI इज अबव द माइनस DI हियर इन दिस केस, व्हिच इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट चल रहा है। वैसे ही जब माइनस DI अबव है प्लस DI के, तो दिस इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पर एक बेरिश सेंटिमेंट प्रेजेंट है। So we'll be using this ADX indicator along with our PSAR to make a confirmation for our entry. अब इसके बाद जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो है मूविंग एवरेजेस। तो ऑब्वियसली जैसे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द मूविंग एवरेजेस इन योर सेटअप्स। तो ये हम एक अच्छा क्लियर इंडिकेशन दे देते हैं कि वेदर द प्राइसेस आर अबव द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। जैसे यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, डेली टाइम फ्रेम पर जैसे हम 50 200 डेज मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, that gives us an idea of the overall strength of the market. तो यहाँ पर हम moving averages को भी ऐड कर लेंगे। We'll use two moving averages over here. जैसे यहाँ पे I will just take the EMA 20 over here. तो हमारे near term trend के लिए 20 का इस्तेमाल कर लेंगे, and for a bit of a longer view हम यहाँ पर 50 का इस्तेमाल कर लेंगे। So when the price is above both of these moving averages, we can say the market has strength. एक positive अच्छा uptrend present है when the price is above both of these moving averages. Similarly, हम कहेंगे कि downtrend शुरू हो चुका है when the price moves below these moving averages. तो using these averages also gives us an idea कि trend का confirmation जो है, because यहाँ पर हमारी reversal तो शुरू हो चुकी है. We have gotten an indication कि uptrend शुरू हो चुका है, बट ये जो अपट्रेंड स्ट्रेंथ कैच करेगा जब इसमें मोमेंटम आएगी, दैट विल बी आफ्टर द प्राइसेस हैव क्रॉस्ड अबव द मूविंग एवरेज लेवल्स। दिस इज अनदर थिंग जो हम दिमाग में रखेंगे, दिस इज अ वेरी की थिंग फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड। तो हमने दो इंडिकेटर्स देख लिए, जो है एक ट्रेंड स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा जो है ट्रेंड कंफर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड द थर्ड इंडिकेटर दैट विल बी यूजिंग, थर्ड सेट ऑफ इंडिकेटर्स, हम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर्स विच आर ऑसिलेटर्स like the RSI and MACD, and ये भी once again हमें momentum का idea देती है। So we can use either of these RSI, MACD जो हमारे stochastic indicator है, we can use either of these three to get an idea of the momentum as well. Momentum rise हो रहा है, momentum fall हो रहा है, what sort of momentum is present in the market, and along with this of course हम volumes को भी जो है, we'll keep the volumes in mind. Volume जो है obviously very key indicator particularly for intraday trading, जो हमारा आज का फोकस रहेगा इस वेबिनार के लिए। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड किन इंडिकेटर्स को हम अच्छी तरीके से पेयर कर सकते हैं विद द पीसार टू गेट प्रॉपर एंट्रीज एंड एग्जिट्स अलोंग विद गुड कंफर्मेशंस, तो हम मूव ऑन करेंगे हमारी एक्चुअल ट्रेड सेटअप पे। तो अब जो है वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, बट ये एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने के पहले आई जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया कि इफ आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर स्विंग ट्रेडर्स, लॉट ऑफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर्स, but
आपकी प्रेफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आई वुड आल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए वंस अगेन आई विल बी लॉन्चिंग अ शॉर्ट पोल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वोट ऑन दिस। तो तीन हम ट्रेडिंग स्टाइल्स मेजरली हम क्लासिफाई करेंगे, जो है स्कैल्पिंग, मोमेंटम, पोजिशनल। स्कैल्पिंग वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम्स, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, इन टाइम फ्रेम्स पे शॉर्ट प्राइस मूवमेंट्स कैप्चर करने के लिए, इफ दैट इज योर प्रेफर्ड स्टाइल, प्लीज आप वो वोट कीजिए। मोमेंटम इज अ बिट ऑफ अ लॉन्गर ट्रेड्स, हम बड़े टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे, लाइक 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, to catch slightly longer trades with a better confirmation along with the help of these indicators. Scalping majorly हम price action के basis पर ही देखते हैं। एंड तीसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, दैट इज द पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पर आप कुछ ट्रेड जो है, मे बी यू लुक एट लॉन्गर टर्म इंट्राडे चार्ट, जैसे 2 आवर चार्ट्स, 4 आवर चार्ट्स, एंड मेजरली आप जो है होल्डिंग पीरियड आपका कुछ दिनों का होल्डिंग पीरियड है। आई जस्ट वांट टू सी आपका प्रेफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आई वुड जस्ट लाइक टू नो अ बिट अबाउट दैट। So I can see almost 60 to 70% of people have voted. बाकी जो attendees हैं, जो participants हैं, please vote on this poll as well. हमें अच्छा एक idea मिल जाएगा। So this session can be the most productive. किसके लिए इस strategy सबसे ज़्यादा useful रहेगी, उसका हमें idea। So we'll wrap up our poll. So I can see the majority of traders prefer the scalping trading style, with with it quite closely being followed by the momentum traders. And जो है, the in the final place, in the last place, we have the positional traders. तो आज का जो strategy रहेगा, it is mostly catered towards the momentum based traders जो slightly longer intraday holding periods रखते हैं. Maybe you'll hold it for around an hour, a bit closer to that. Slightly longer holding periods for intraday time frames. तो हमारा ट्रेड सेटअप जो है, we'll move on to this. तो हमारे ट्रेड सेटअप में I'll just go to the सॉफ्टवेयर once again. हमारा सेटअप जो है हम क्रिएट कर लेंगे, एंड फॉर द पर्पस ऑफ, अगर आपको ये सेम सेटअप यूज करना है, सो विल बी अपलोडिंग द वेबिनार फाइल्स टू द सर्वर्स। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो उसे। तो यहाँ पर इफ यू जस्ट गो टू द फाइल मेन्यू, डाउनलोड फाइल्स, मिसलेनियस सिलेक्ट कर लीजिए एंड गेट फाइल लिस्ट कीजिए। तो आज के डेट के साथ एक वेबिनार फाइल अवेलेबल है। इफ यू हैव द सॉफ्टवेयर ओपन राइट नाउ, आप साइड बाय साइड लोड करके चेकआउट कर सकते हो इस टूल को। तो आफ्टर डाउनलोडिंग दी फाइल, आप जस्ट यहाँ पे चार्ट मेन्यू में जाइए, लोड स्क्रीन ऑप्शन को चूज कीजिए, एंड यू विल फाइंड दी स्क्रीन बाय द नेम ऑफ इंट्राडे पीएसआर ओवर हियर। वैसे जस्ट आप लोड कर लोगे। So over here you will get a 2 chart setup over here. मैं इसे arrange कर लेता हूँ. So we have a 60-minute setup over here and we have a 15-minute setup on the right over here. तो हमारे जो entries होंगे, they will be based on a 15-minute time frame यहाँ पर जो है। And the one thing that you will need to do is यहाँ पर settings menu में जाकर जो script sync option है, आप इसे on कर लीजिए, ताकि दोनों charts पर, आपके 60-minute and 50-minute chart पर सेम स्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट हो। उसके लिए आप स्क्रिप्ट सिंक कर लीजिए, वरना यू विल हैव टू इंडिविजुअली चेंज द स्क्रिप्ट ऑन बोथ द चार्ट्स। दिस जस्ट मेक्स इट अ बिट मोर कन्वीनियंट। तो ये स्क्रिप्ट सिंक हमने ऑन कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट विल डिस्कस 15 मिनट पे हम क्या सेट ऑफ पैरामीटर्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 15 मिनट पे वी हैव द एडीएक्स ओवर हियर विद द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। 14 पीरियड का ही हमने एडीएक्स रखा है यहाँ पर। द सेकेंड थिंग इज आर मूविंग एवरेजेस। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, on a daily time frame we are using a 20 and 50 moving average, but intraday के लिए for a bit of a quicker signal हम यहाँ पे EMA 10 and EMA 50 का usage कर रहे हैं for a trend filtering। तो यहाँ पर जो EMA 10 है, that is the white EMA over here and the EMA 50 is the blue. You just confirm that once as well. Yes, so the EMA 10 is the white EMA and the EMA 50 is the blue EMA over here. एंड इसी के साथ हमने पीएसआर के जो पैरामीटर्स यूज किए हैं ऑन 15 मिनट्स, दैट इज 0.04 फॉर द मिनिमम स्टेप वैल्यू इज 0.04 एज वेल, एंड द मैक्सिमम स्टेप वैल्यू इज 0.4। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट से ऑलमोस्ट डबल पैरामीटर्स किए हैं, बिकॉज इंट्राडे में वी हैव अ लॉट ऑफ नॉइज, वी हैव अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। सो टू प्रॉपरली कैप्चर एंड एडजस्ट फॉर दैट वॉलेटिलिटी, हमने यहाँ पे हायर सेट ऑफ पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया, which gives better results. So I've tested multiple set of parameters, but I found that using this combination over here, जो मैंने currently set किया है 15 मिनट के लिए, this was giving me the best set of results. Tried slightly higher, slightly lower parameters as well, but this is what I found to be the most comfortable. तो हम इंट्राडे 15 मिनट्स के लिए इस पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे हमारे 60 मिनट्स के चार्ट पर। 60 मिनट्स पर हमने जो ऐड किया है,
यस, सो 60 मिनट्स पे यहाँ पे वी हैव एडेड 2 इंडिकेटर्स। वंस अगेन हमने पीसार को भी ऐड किया है 60 मिनट्स पर, बट इन दिस केस द पैरामीटर्स आर स्लाइटली डिफरेंट हियर, so they are slightly lower than the जो पैरामीटर्स हमने इंट्राडे पर रखे हैं उससे स्लाइटली लोअर है, बट इट इज हायर देन द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो जैसे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 0.02 हमने 0.025 रखा है। इट इज स्लाइटली हायर टू एडजस्ट फॉर द वॉलेटिलिटी ऑफ इंट्राडे। तो सो यू डू नॉट नीड टू एडजस्ट दीज पैरामीटर्स, आपको जो स्क्रीन मिलेगा उसमें ऑलरेडी ये पैरामीटर्स सेट है, नो चेंजेस नीड टू बी मेड एज सच। एंड दी सेकंड इंडिकेटर जो हमने 60 मिनट्स पर ऐड किया है, that is the spider congestion zone. So if you're not familiar with what the spider congestion zone is, यहाँ पर अगर आप आपके सॉफ्टवेयर में आ जाओगे, spider congestion zone, so basically what this does is it highlights key support and resistance levels जहाँ पर price consolidate कर रही है. So whenever the price goes into a range bound movement, हमें यहाँ पर चार्ट पर indications मिल जाता है. Just full screen this chart over here. जैसे निफ्टी में फॉर एग्जांपल completely sideways movement yesterday, 19th का इंट्राडे चार्ट है यहाँ पर, completely sideways movement, and this is indicated over here. अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 green bars present है, which is highlighting the higher bound and lower bound of this congestion. तो जब तक price इस congestion के zone में move कर रहा है, we will not be taking trades here because we will get stuck in a consolidation. And यहाँ पे हमें जो momentum that we are looking for, हमें यहाँ पे smooth and अच्छा momentum नहीं मिलेगा. What this also helps us with is it helps us to identify key supply and demand levels as well. तो जैसे यहाँ पर अगर हम निफ्टी में देखें, ये हमें करंट एक कंसोलिडेशन नजर आ रही है, बट अलोंग विद दिस अगर प्राइस इस लेवल के बियॉन्ड चली जाती है, सो व्हाट कैन बी आवर नेक्स्ट सेट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल्स हियर। सो वी कैन सी कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जोन हाईलाइटेड है, जो प्रीवियस जोन हाईलाइटेड है, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस होने की पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट दिस स्पाइडर कंजेशन जोन टूल डज इज इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन रेंजेस एंड आल्सो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स। तो ये हमारा सेटअप हो गया 15 मिनट्स पर एंड 60 मिनट्स पर। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज यहाँ पर वील गो बैक टू आवर स्लाइड ओवर हियर। तो यहाँ जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है श्नाइडर का, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सो इन दिस केस दी 15 मिनट एंड 60 मिनट चार्ट्स पोजीशन इंटरचेंज है, बट यू कैन एडजस्ट दिस एज पर योर प्रेफरेंस। मैंने यहाँ पे इन दिस स्लाइड आई हैव केप्ट दी 15 मिनट्स ऑन द लेफ्ट, बट जो एक्चुअल वेबिनार फाइल है इन दैट इट मे बी ऑन द राइट। सो बट इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस, just depends on your convenience. तो जैसे यहाँ पर श्नाइडर का हमने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज फ्रॉम yesterday itself, yesterday कल के जो इंट्राडे मार्केट में से हमने इसे पिकअप किया है। सो इन श्नाइडर आप देख सकते हो यहाँ पर, और रादर आई विल जस्ट स्विच टू दी सॉफ्टवेयर इटसेल्फ ताकि हम जरा और थोड़ी इंटरैक्टिव तरीके से इसे डिस्कस कर पाए। हमने श्नाइडर ले लिया है एंड बिकॉज वी हैड द स्क्रिप्ट सिंक फंक्शन ऑन, तो यहाँ पे इमीडिएटली दोनों जो चार्ट्स हैं वहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट जो है अपडेट हो चुका है। सो आर एंट्री विल बी ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा 12:30 कैंडल है, हियर आर पीसार हैज रिवर्स्ड। यहाँ पे ऑलरेडी सुबह से एक स्लाइड अप ट्रेंड प्रेजेंट था श्नाइडर में, बट देन वी सॉ स्मॉल रिवर्सल हैपनिंग ओवर हियर इन दिस केस। एंड अब आप पूछोगे कि यहाँ पर जो रिवर्सल बनी है, should we take a trade in this? And my answer would be no, we will not take a trade in this, because in this case हमारे जो confirming factors हैं, PSAR के साथ हम moving averages का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ADX का इस्तेमाल कर रहे हैं। So even though the PSAR is signifying a reversal over here, our ADX and our moving averages are saying no, we will not take this trade. Why? Because price एक तो यहाँ पर moving averages के ऊपर चल रही है, this is defining कि यहाँ पर एक uptrend ही present है, and we will not take a negative trade while this uptrend is present. तो यहाँ पर even though short term whipsaws आएंगे, हम avoid करेंगे उन्हें trade करने को unless we get a confirmation from our other indicators. ADX में भी यहाँ पर हमारा trend strong है, but this positive DI is above the negative DI. Once again, also a bullish confirmation over here, जिस bullish confirmation के presence में हम नहीं लेंगे और negative trades. So this is an example. यहाँ पर हमारी जो signal candle है, जहां पर हमारे सारे फैक्टर्स मैच हो रहे हैं, तो 15 मिनट पर पीसार हैज टर्न्ड बुलिश ओवर हियर। उसी के साथ एडीएक्स में स्ट्रेंथ है, इट इज अबव द लेवल ऑफ 20 एंड द प्लस डीआई इज अबव द माइनस डीआई एंड प्राइस इज आल्सो अबव बोथ मूविंग एवरेजेस। तो इस इन दिस केस ये हमारा सिग्नल कैंडल फॉर्म हो गया। एंड एट दैट सेम टाइम हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो 60 मिनट्स का चार्ट है, व्हाई वी हैव एडेड द पीसार ओवर हियर, इज हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंफर्मेशन भी मिल जाता है।
So PSAR is also bullish in this case. It is showing us that yes, हम 15 मिनट्स में यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं. अब हमारी सिग्नल कैंडल फॉर्म हो चुकी है on this 12:30 candle over here. ये हमारी सिग्नल कैंडल है. Once this candle closes at 12:30, next जो कैंडल ओपन होगी, that candle should break out above the high of this. तो यहाँ पर जो कैंडल का हाई है, that is present at, take a look, this is around the level of 715 के करीब. तो जब इसका हाई क्रॉस हो जाता है ऑन दी फॉलोइंग कैंडल, हमें एक फॉलो थ्रू मिल रहा है हमारे सिग्नल का, एंड दैट इज व्हेन वी विल मेक आवर एंट्री. तो जैसे यहाँ पर स्नाइडर में हमारी एंट्री जो है अराउंड 714 के लेवल पे फॉर्म हुई है, एंड एट दैट टाइम वील आल्सो वेरीफाई इफ द प्राइस इज इनसाइड अ कंजेशन ओवर हियर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कंजेशन फॉर्म हुई थी सुबह के समय पर, यहाँ पर एक हाई बनाया था एंड देन the price remained below that high, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था. तो उस वजह से we will wait for a breakout of the consolidation which has formed. तो हमें breakout भी मिल गया हमारे consolidation का in this candle over here. So हमारा 60 minutes पे confirmation है, 15 minutes पे भी confirmation है, and this is a perfect example of an entry. Let me also just check the chat box here. Yes, so for example, we can see that Mr. Amit has suggested an example of Tata ELXC. Tata ELXC भी हम just एक check कर लेते हैं. So Tata ELXC we can see that अगर हम यहाँ पर 60 minutes पर देखें, yes, the stock has been bullish since yesterday itself. तो 60 minutes पर एक trend reversal clearly indicated था, and जो हमारी entry signal है, this was already formed yesterday itself. So if we take a look here, PSAR has turned bullish in this case. Price has moved above the moving averages. तो यहाँ पर ये दिन के आखिरी कैंडल जो 315 to 330 की कैंडल है, over here is where we have gotten our indication. So as such, on Friday we did not get a fresh entry into the stock, but on Thursday itself during the closing we have gotten an indication कि yes, यहाँ पर एक bullish trend establish हो चुका है. So here we could have taken a trade on the opening over here itself. So yes, Tata ELXC is a stock where the PSAR has given us an indication, and other examples as well. So Mr. Deepak has asked if it works on Nifty. Sure, we'll take a look at Nifty over here. I would suggest not using this in Nifty as such, because Nifty is much more volatile and range bound compared to other stocks. So इसमें उतना smooth जो movement है, you're not able to capture it very well in Nifty. So I would suggest, because over here, if we take a look at the ADX as well, it barely manages to stay above the level of 20 over here. So this is not giving us an indication of a strong uptrend over here, because agar hum zoom out kare for the past few days, the ADX has not really managed to stay above the level of 20. So only when there is a strong trend, we are able to identify. जैसे यहाँ पर on the day of Thursday, if we take a look, तो यहाँ पर जो है we had a bit of a stronger indication over here, but here as well the trend was not as strong. So I would suggest primarily avoiding this for Nifty and Bank Nifty जो indices हैं, because there's a lot more consolidation and range bound movement present in those. I would suggest avoiding those. Mainly ये stocks के लिए ज़्यादा optimal है strategy. And yes, so how to identify stocks? हम screen कैसे करेंगे stocks को? So for that, we have also created a scanner, a technical query. तो यहाँ पर हम query menu में जाकर technical query को select कर लेंगे. And जो आप webinar की file download करोगे server से, you will also be able to find the technical query over there. And the query is by the name Intraday Stop and Reverse. So Intraday Stop and Reverse मैंने add कर लिया. And जो group of stocks पे हम run करेंगे, you can either choose the Nifty 500 or the Nifty F&O scripts, because other than this, when I tested this on Nifty Total Market and the full NSE scripts as well, so I found that the scripts which were getting highlighted, उसमें उतनी अच्छी liquidity नहीं present थी, which was not very favorable. So ideally we'll be focusing on the Nifty 500 and the Nifty F&O scripts. तो यहाँ पर we'll just run this on the zero offset, which is on our last candle over here. Then day की जो last candle है, we'll just run it on that. So we have two results over here, which is fact and Manappuram. So let me just move this query window a bit lower over here, so we're able to see the chart clearly. यहाँ पे 15 मिनट पे हम zoom in करेंगे. So we can see that overall एक uptrend maintained था यहाँ पर, but since the price was below the moving averages,
you would not have entered the trade at this time. जब finally price moving average के above गई, for example, at this level over here, the price still remained mostly sideways in this case. So not a very positive indication at this time over here. But then finally एक यहाँ पर हमें एक reversal मिली है in the PSAR. Because the price had remained sideways for so long, the PSAR over here, the dot over here, it had been crossed by the next low over here, जिस वजह से PSAR shift हो गया. And then immediately we saw strong volumes coming through over here. And उस वजह से once again there was a shift in the PSAR here. And ये जो candle है यहाँ पर जो बनी है, this is a signal candle here. And then signal candle का जब follow through आया on the next candle, when the high was broken, the high was at the level of around 863. Once this high was broken, that is when we will make our entry. तो यहाँ पर 15 मिनट पर हमारी entry जो है properly defined थी. What we'll also do is जब हमें signal मिलता है, हम 60 minutes पर एक quick scan कर लेंगे to see if all of our criteria is being matched properly. तो 60 minutes पर अगर हम देखें, yes, there is a consolidation present over here. सुबह के समय जब प्राइस साइडवेज मूव कर रहा था, ऑलमोस्ट इनसाइड बात चल रहा था फॉर क्वाइट सम टाइम, तो यहाँ पर एट दिस टाइम देयर वाज अ कंसोलिडेशन व्हिच वाज प्रेजेंट. बट जो हमें टाइम पर सिग्नल मिला है व्हेन द प्राइस इज क्रॉस्ड बियॉन्ड द लेवल ऑफ 863, उस समय पर द प्राइस हैज एग्जिटेड आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन व्हिच वाज प्रेजेंट. तो यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया. एंड सो इन दिस केस आवर एंट्री इज प्रॉपर्ली डिफाइंड. 60 मिनट्स पर बुलिश है, consolidation में present नहीं है, it has just broken out of this consolidation here. So fact over here is a perfect example of a bullish trade. The second stock that we had seen जो हमारे scanner में pick up हुआ है on the last candle over here, it is Manappuram. Manappuram को भी हम एक बार देख लेंगे. तो Manappuram once again हमारे लिए proper सारे conditions match हो रहे. So in Manappuram over here once again हमारा जो reversal हुआ था that happened earlier in the day itself. तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियसली हमें एक बार जो है सिग्नल मिल चुका था एट दिस टाइम हियर. बट तो यहाँ पे हमारी इनिशियल एक एंट्री ऑलरेडी बन चुकी थी. बट एट दैट टाइम इफ यू टेक अ लुक, द प्राइस वाज मूविंग इनसाइड दिस कंसोलिडेशन ओवर हियर. सो वी विल बी अवॉइडिंग टेकिंग अ ट्रेड एट दिस टाइम बिकॉज यहाँ पर कंसोलिडेशन में प्रेजेंट था. वी आर नॉट एज श्योर ऑफ द प्राइस ट्रेंड सस्टेनिंग ओवर हियर बिकॉज मेजर जो वॉल्यूम्स आए हैं दे हैव कम थ्रू लेटर इन द डे ओवर हियर. तो यहाँ पर जो है हमारे एक अप ट्रेंड सस्टेन था. देयर वाज अ स्मॉल रिवर्सल ओवर हियर इन द पीएसआर बिकॉज ऑफ द साइडवेज मूवमेंट व्हिच हैड हैपेंड वंस अगेन ओवर हियर. बट फाइनली जब प्राइस ने वापस एक रिवर्सल बनाई व्हेन आवर अप ट्रेंड वाज मेंटेन्ड वंस अगेन, तो यहाँ पर हमारी जो सिग्नल कैंडल आई है दैट वाज फॉर्म्ड ओवर हियर एट 315 को यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई. वंस द हाई ऑफ दिस वाज ब्रोकन व्हिच वाज एट अराउंड 293, तो यहाँ पे हमारी एंट्री फॉर्मेशन होगी. तो उसके पहले बिफोर टेकिंग आवर एंट्री विल कंफर्म आवर ट्रेंड ऑन द 60 मिनट्स एज वेल. तो 60 मिनट्स पर हम देख सकते हैं कि एज सच जो है यहाँ पे कोई मेजर कंसोलिडेशन प्रेजेंट नहीं है ओवर द पास्ट फ्यू डेज. So here we can maintain our entry, but obviously this being the last candle of the day, you would not be taking an intraday trade over here. So ये signal जो है, we will not actually be acting, and we cannot really backtest it further because this query involves multiple time frames. हम एक बार देख लेते हैं क्या conditions involved है इसमें. So we have kept a filter over here for the PSAR in the 60 minutes. बाकी सारे हमारे conditions जो हैं, they are on the 15 minutes. So all of these conditions are also mentioned over here in the presentation. We'll just go through it once again. तो PSAR जो है 15 मिनट पर bullish turn हो रहा है. We are getting a trend shift. उसी के साथ at that time the PSAR should have been bullish on the 60-minute time frame. And the third point is that जो हमारे moving averages है 10 and 15 period moving averages, they are using the exponential moving averages. So the price should be trading above both of these levels. And along with that, our trend strength confirmation, जो ADX है, that should be above the level of 20, and our positive BI should also be above the negative BI. And finally, जो है, the price should cross above the high of the signal candle, जहाँ पर ये सारे parameters match हो रहे हैं. So I have accounted for this final condition as well, कि price previous candle के high को break कर रही है, जो follow through है हमें मिल रहा है. I have included this in the query itself, so you do not need to wait for an additional candle. So this is our bullish trade setup. वैसे हम यहाँ पर एक bearish setup भी देख लेंगे.
So this is an example of yesterday where a bearish setup was formed at Blue Star. We'll just go to Blue Star over here in our software. Yes, तो जैसे हमने यहाँ पर Blue Star देखा, over here the price, the bearish trend itself has started from today's start over here. तो आज का जो पहला कैंडल है वहां से हमारा bearish trend has started on the 60-minute time frame. So the 60-minute time frame over here, we have gotten a proper confirmation कि यहाँ पर हमारा trend bearish हो रहा है. Here we can see that there is a support zone which is present at around the level of 1836. ये जो है हम अगर congestion zone को देखें तो 1837 is the low of that congestion zone. So we'll wait for the price to break out of that level. जब इस range में trade हो रहा है हम avoid करेंगे इसमें trade लेना. So over here, as you can see, when we have gotten our indication over here, that is on this candle. तो यहाँ पे ये जो candle है, the PSAR has turned bearish over here. Along with that, the price has also moved below both the moving averages. यहाँ पर 10 and 50 के नीचे आ चुका है price. Our ADX is rising over here. We have a strong trend which is present. 36 का ADX value है. And along with that, जब next candle पे हमारा follow through आया. So this is our signal candle over here. And the next candle, ये जो 10:30 candle है, that is when our follow through is generated. एंड इन दिस केस जो हम यहाँ पे कंजेशन जोन देख रहे हैं, ये कंजेशन जोन को ब्रेकआउट कर लिया है इन दिस फॉलोइंग कैंडल. सो दिस इज अ प्रॉपर एंट्री ओवर एंड दिस इज व्हाई वी आर लुकिंग आउट फॉर दिस कंजेशन जोन बिकॉज a lot of times the reversals happen exactly from these levels which have been defined by these congestion zones. So this helps us to get a general idea price action के through भी कि कहाँ पर हमें watch out रखना चाहिए for a potential reversal. So here, after the breakout has occurred, we've gotten a great follow through on this movement. And finally, जो है हमारी position, it has been exited over here. Almost यहाँ पे हमारी entry जो है, we take the low of this candle. So the low is at around 1834. So 1834 से almost यहाँ पर at this level जब यहाँ पे trend shift हुआ to 1776. So in this way, जो है हमारा पोजीशन यहाँ पे ट्रेल होते रहा है. दी PSAR acts as a wonderful trading stop loss in this case, but in general if you want to keep a percentage based exits as well, so you can keep a 1:1 risk reward ratio. तो जो है हमारा जो तो हमारा जो stop loss रहेगा, you can keep either a 0.5 to 1% percentage based stop loss, and similarly उस basis पे हमारा जो profit रहेगा, you'll be keeping a 1 to 1.5% profit अगर आप purely percentage terms में देखना चाहोगे. So those are the percentage based levels. Whereas if you want to follow the PSAR system as it was defined, you can simply use the PSAR dots itself as your trailing stop loss and continue your position as long as the dots do not shift. Mr. Amit has answered, how did you get Blue Star? So yes, Blue Star would have come up in the scanner, but we cannot exactly backtest it right now because our query which is created, it involves multiple time frames. So adjusting the query offset and identifying this particular trade, it would not be possible currently. But this result over here, it matches all of our conditions properly. तो जो conditions हैं, हम उसे भी एक बार देख लेंगे. तो bullish के लिए जैसे conditions थे, we have the exact opposite over here for the bearish trade setup. So PSAR is turning bearish on the 15-minute time frame. The PSAR is already bearish on the 60-minute time frame. And उसी के साथ the price should be below both 10 and 50 moving averages. ADX once again should be about 20. तो ये bullish bearish setups दोनों में एक constant है. That is the ADX should be about 20 because ADX is simply defining the strength of a trend and not the direction. Trend का direction जो है उसके confirmation के लिए we have the minus DI which is giving us a confirmation. And finally the price should cross below the low of the signal candle. So I have seen a comment over here in the chat box where particular users, they have already used the PSAR, they're familiar with the PSAR, but ये जो हम यहाँ पर breakout का जो signal candle का system रख रहे हैं, where we are waiting for the next candle, the user has mentioned that the entries do get delayed quite a bit. So in this case, I do understand what you are trying to say, but I have tested the strategy a bit and I have found that if we do not wait for these breakout of the signal candle, a lot of times we do end up with a consolidated stocks. The stock does end up going into a consolidation and eventually the trend reversal also fails in that case. So this
crossing of the signal candle, it gives us a better confirmation. Sure, in this case, our profits are slightly trimmed because we are waiting a bit more for our entry, but this gives us a more sure entry, even though we have a slightly lower take profit in this case. So definitely it can be modified. So I can show you how you can modify the technical query as well to remove the signal candle requirement here. So over here, you can see that all of these conditions, if I just go to the condition page, I have added the check on nth back bar 1 condition over here, which means that it is checking the previous candle. So if you want to avoid that and you want to directly make an entry based on wherever these signal candles are forming, you can simply just modify this to 0 and modify all of the conditions where the n back bar is 1, you can change it to 0, and you can remove this condition over here, which defines the price action where the closing is greater than the previous high, which is C5, and you can also remove the C14 condition. So you can modify the query in this way if you want to directly find the signal candles. But in that case, it does become a bit more unpredictable because you're not getting a very sure entry in those cases. So definitely you can try it out. But based on personal trial of this particular strategy, I found it a bit more effective to wait for a follow through candle. तो इस तरीके से जो है हमारी ट्रेड सेटअप्स फॉर्म्ड है दोनों बुलिश एज वेल एज बेरिश एंट्रीज के लिए, एंड हमारे स्टॉप लॉस के लिए एंड टारगेट के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर आप परसेंटेज बेसिस पे देखना चाहते हो, सो यू कैन कीप अ 0.5 to 1% स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी ईदर अ 1-to-1 रेशियो और अ 1-to-1:5 रेशियो. You can use those particular ratios for determining your targets and stop losses. So ये जो strategy, I hope all of you have been able to download the file from the server and you have not faced any issue in locating these files. So thank you to everyone for attending this session. बहुत आज productive session रहा है. I hope आपके लिए. So if you have any queries, please आप इन numbers पे further contact कर लीजिए आप. Thank you everyone and have a nice day.